इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ बिझनेस अँड मीडिया ISB&M पुणे येथे उत्कृष्ट दर्जाचे संशोधन डिझायनिंग व पब्लिशिंग या विषयावर आंतरराष्ट्रीय फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम FDP 2025 पार पडला. संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार व डॉक्टर अरुण जोशी यांच्या सहकार्याने आयोजित या 4 दिवसीय हायब्रिड कार्यक्रमात 65हून अधिक संशोधक सहभागी झाले. या कार्यक्रमात डॉक्टर मीना बेगी, साउथहॅम्प्टन बिझनेस स्कूल UK, डॉक्टर रमाधार सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, बार्कलेज इंडिया यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापकांनी संशोधन पद्धतीशास्त्र, डेटा ॲनालिटिक्स, स्मार्ट PLS, SPSS, बिब्लिओमॅट्रिक व मेटा ॲनालिसिस यावर मार्गदर्शन केले. डॉक्टर अरुण जोशी यांनी सांगितले की FDPचा उद्देश जिज्ञासा केंद्रित संशोधन संस्कृती विकसित करणे हा आहे. तर डॉक्टर प्रमोद कुमार म्हणाले, एक प्रभावी PGDM संस्था दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व व शैक्षणिक उत्कृष्टतेतून उद्याचे जागतिक बिझनेस लीडर्स घडवते. हे FDP त्या ध्येयाचे प्रतीक आहे. ये ISBM का इनिशिएटिव है to raise the talent standard in research among institutions across the country and across the state. और इसमें हमको अच्छी सफलता मिली क्योंकि हमारे पास दिल्ली से भी लोग आए हैं, हमारे पास नागपुर से भी लोग आए हैं, पुणे के तो हैं ही, मुंबई से भी आए हैं. सो ऑल अक्रॉस द कंट्री, खड़गपुर से जो कि कलकत्ता के पास में है, वहाँ से भी लोग आए हैं. तो वी हैड अ गुड रीच इन दिस प्रोग्राम. एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना जिसके लिए लोग दूर दूर से चल के आएंगे. पीपल विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस to attend such a program is a lot of effort which has been put by the institution, Dr. Arun Joshi, and a lot of supporting students and the other staff and faculty members of the institute. And this is a good initiative toward equipping our people in research skills. This program is excellent because research is like a sport. And if you run the marathon, a marathon begins with one step. People learn how to run, they get trainers, they get a team, a support team. Research is the same. This is a research support team to help people develop and advance their skills. And as they advance, they hopefully will help others advance. So we're growing research capacity through educating the next generation, and they will continue to develop and advance, developing the next